इस वीडियो में वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन बाइफॉस्फेट एंड बिसफॉस्फेट। जब भी आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तब आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, बाइफॉस्फेट एंड बिसफॉस्फेट, एंड स्टूडेंट्स आर यूजुअली कंफ्यूज्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइफॉस्फेट एंड बिसफॉस्फेट। आज इस लेक्चर में हम यही डिफरेंस देखेंगे ना। यहां पर आप देखिए लेफ्ट साइड में मैंने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाया। इट इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड वी नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। दिस मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ glucose has about 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms। तो सिंपल सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। तो यहां पर आप देखिए वी हैव दिस मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल में आप देखिए अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन नंबर 6 पर we have this phosphate group। We have this phosphate group. So this means phosphate is present at carbon number 6. So this glucose will be called as glucose 6 phosphate because phosphate is present at carbon number 6. Simple. Glucose 6 phosphate. Now we'll go to this molecule. This is glucose 6 biphosphate. यहां पर आप देखिए, so at carbon number 6, this is the carbon number 6 and this carbon number 1. Carbon number 6 पर there are two phosphate groups which are present on the same carbon atom। एक ही कार्बन एटम पर दो फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं या प्रेजेंट है, तो ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कहेंगे ग्लूकोज 6 बाइफॉस्फेट। सो व्हेन टू फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन वी यूज दिस प्रीफिक्स बाय। नाउ वी हैव दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहां पर एक फॉस्फेट प्रेजेंट है एक कार्बन पर और दूसरा फॉस्फेट प्रेजेंट है कार्बन नंबर 6 पर। So this means two phosphate groups are present on different carbon atoms. So we can call this glucose as glucose 1,6-bisphosphate. Why bis? Because these two phosphate groups are present on separate carbon atoms. So that's why it's called as glucose 1,6-bisphosphate. So whenever two phosphate groups are present on separate carbon atoms or different carbon atoms, then we use the term or the prefix bis। अगर तीन होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस हाइड्रोजन के बदले एक और फॉस्फेट होगा और इस हाइड्रोजन का नंबर होगा 3 क्योंकि यहां पर 2, देन वी हैव 4 5 एंड 6, तो इसका क्या नाम पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा ग्लूकोज 1,3,6 ट्रिसफॉस्फेट। तो याद ये रखेंगे आज के बाद। सो इफ टू फॉस्फेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन इट्स कॉल्ड बाइफॉस्फेट। इफ थ्री फॉस्फेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन इट्स कॉल्ड एज ट्राइफॉस्फेट। However, if two phosphates are present on separate or two different carbon atoms, then we use bisphosphate. If three phosphates are present on different carbon atoms, we called it as trisphosphate. So, hope आपको समझ आएगा what is difference between biphosphate and bisphosphate.